Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video, we discussed how to study the chapter Cell, the building block of life. We understood how we are going to approach this chapter, what topics we are going to cover, and how we are going to make our preparation easier. So, now let's actually start studying the chapter. Our topic for today's video is structure of a cell. In this video, we are going to understand the structure of the cell, beginning with the cell membrane. We will discuss cell membrane, selectively permeable membrane, osmosis, diffusion, isotonic, hypotonic, and hypertonic solutions, fluid mosaic model, cell wall, plant cells and animal cells, and some important NCRT activities. And at the end of the video, we will also prepare short revision notes for this entire topic. So take out your notebook and let's begin. Structure of a cell. You have learned that cells are organized into specialized tissues and organs and collectively perform specific function. For these cells to function as units, they must be able to interact with one another and with their surrounding. These interactions occur at the cell boundary, where substances move between the cells and their external environment. Even single celled organisms exchange materials and respond to their environment through cell membrane. इस पैराग्राफ में सबसे पहले हमें यह समझाया गया है कि सेल स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स का हिस्सा होते हैं और कलेक्टिवली स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन कोई भी सेल अपने सराउंडिंग से कंप्लीटली अलग होकर काम नहीं कर सकता। सेल को अपने एनवायरनमेंट के साथ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसे वेस्ट मटेरियल्स को बाहर भी निकालना होता है। इसलिए सेल और उसके सराउंडिंग्स के बीच सब्सटेंसेस का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और यह मूवमेंट सेल की बाउंड्री पर होता है। अब यही बाउंड्री हमें अगले टॉपिक तक लेकर जाती है, जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, द यूनिवर्सल फीचर ऑफ अ सेल। The cell membrane is a thin boundary that surrounds a cell that protects its content. It defines the individuality of a cell and is also called the plasma membrane. तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही पतली बाउंड्री है जो पूरे सेल को सराउंड करती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सेल के अंदर मौजूद कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करना। इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से सेल की आइडेंटिटी भी मेंटेन होती है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द सेल मेम्ब्रेन, आंसर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell membrane is selectively permeable, which means it allows some substances to pass through it while blocking others. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सिलेक्टिवली परमेबल। सिलेक्टिव का मतलब है चुनिंदा और परमेबल का मतलब है जिससे सब्सटेंसेस पास कर सके। तो सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन हर सब्सटेंस को फ्रीली अंदर बाहर नहीं जाने देती। ये कुछ सब्सटेंसेस को पास होने देती है और कुछ सब्सटेंसेस को रोकती है। इसे आप एक सिक्योरिटी गेट की तरह समझ सकते हैं। सिक्योरिटी गेट पर हर व्यक्ति को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है। You have learned how oxygen and carbon dioxide move across the membranes of alveoli in the lungs. How does the structure of the cell membrane in the cells of alveoli control the movement of substances across it? एनसीईआरटी यहाँ एल्वोलाई का एग्जाम्पल इसलिए दे रही है क्योंकि हमारे लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन को बॉडी में एंटर करना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलना होता है। इसलिए मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस सब्सटेंसेस का मूवमेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरली क्वेश्चन आता है, हाउ डज द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल दिस मूवमेंट? इसको समझने के लिए एनसीईआरटी हमें एक एक्टिविटी करवाता है और वो है पोटैटो एक्सपेरिमेंट। Activity 2.2, let us experiment. With the help of a kitchen knife, carefully cut a potato into two pieces of roughly equal size. Measure and record the initial weight of both these pieces using a weighing balance. Put one piece of the potato in beaker A with plain water. Put the other piece of the potato in beaker B with 20% salt or sugar solution. Leave them undisturbed for about an hour or until you notice a visible change in the size of the pieces. Measure and record the final weight of each piece.
Calculate the difference between the initial and their final weight. सबसे पहले पोटैटो को अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज टू पीसेस में कट किया जाता है. दोनों पीसेस का जो इनिशियल वेट है वो लेंगे. फिर एक पोटैटो पीस को प्लेन वाटर में रखेंगे और दूसरे को 20% सॉल्ट या फिर शुगर सोल्यूशन में. जब दोनों को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब रखा जाएगा तो इसके बाद हम दोनों का फाइनल वेट मेजर करेंगे और देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है. What do you observe? You may observe that beaker A, the potato piece swells. Beaker B, the potato piece shrink. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्यों हुआ. बीकर ए में प्लेन वाटर है, सेल के बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा पानी अवेलेबल है, इसलिए वाटर सेल के अंदर एंटर करता है. जब वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा तो जो पोटैटो पीस है वो स्वेल कर जाएगा, इसलिए उसका वेट भी इंक्रीज होता है. अब बीकर बी जो हमारा बीकर बी है उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन है. यहाँ बाहर सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए जो वाटर है वो सेल से बाहर निकल गया. जब पानी बाहर निकला तो पोटैटो पीस श्रिंक कर गया और उसका वेट डिक्रीज हो गया. और इसी ऑब्जर्वेशन से हमें मिलता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ऑस्मोसिस. व्हाट डू यू इन्फर? What do you expect in terms of changes in their weight? The weight of the potato piece in beaker A has increased, while the weight of the potato piece in beaker B has decreased. This happens because the cell membrane allows water to move in and out of the cell, but not the sugar or salt molecules. Water moves from an area with more water and less solute dilute solution to an area with less water and more solute concentrated solution until the concentrations in the two areas become equal. This movement of water through a selectively permeable membrane is called osmosis. अब इस कॉन्सेप्ट को बहुत केयरफुली समझिए. सेल मेम्ब्रेन वाटर को मूव करने देती है, लेकिन सभी सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को उसी तरह फ्रीली मूव नहीं करने देती. इसलिए वाटर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है. वाटर कंपैरेटिवली उस साइड से मूव करता है जहां वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उस साइड की, और जहां वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है. मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव कर रहा है. इस मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस कहते हैं. तो ऑस्मोसिस के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, वाटर का मूवमेंट होना चाहिए. सेकेंड, अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन शुड बी देयर. थर्ड, वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. Next, you have learnt in activity 7.8 dye spreading in water and 7.9 fragrance spreading in air in grade 8 that particles of matter intermix due to a difference in their concentration, also called a concentration gradient. Diffusion is the net movement of particles from a higher to a lower concentration which occurs even without a membrane. Osmosis is the diffusion of water across a selectively permeable membrane. In plants, water from the soil enters root cells by this process of osmosis. अब यहाँ हमें एक दूसरा टर्म मिलता है, डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का बेसिक आइडिया है कि पार्टिकल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. ये मूवमेंट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है. लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को कंफ्यूज मत करना. डिफ्यूजन में डिफरेंट पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है और वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है. सो रिमेंबर, diffusion is movement of particles. Osmosis, movement of water. Through a selectively permeable membrane. Through a selectively permeable
membrane. What if a cell is kept in salt or sugar solutions of different concentration? Solute concentration of extracellular medium is equal to solute concentration of intracellular medium, then it will be isotonic solution. When solute concentration of extracellular medium is less than solute concentration of intracellular medium, then it will be hypotonic solution. When solute concentration of extracellular medium is more than the solute concentration of intracellular medium, it will be hypertonic solution. आइसोटोनिक कंडीशन में एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और इंट्रासेलुलर मीडियम में सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होती है, यानी सेल के बाहर और अंदर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए वाटर का कोई सिग्निफिकेंट नेट मूवमेंट नहीं होता। इस कंडीशन में सेल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है। एक इजी ट्रिक है इसको याद करने के लिए, दैट आइसो इज इक्वल टू सेम। आइसो मीन्स सेम और इक्वल। अब हाइपोटोनिक कंडीशन में सेल के बाहर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर से कम होती है। इसका मतलब बाहर कंपैरेटिवली ज्यादा पानी अवेलेबल है, इसलिए वाटर बाहर से सेल के अंदर जाता है, और जब वाटर सेल के अंदर आता है सेल स्वेल करता है। तो याद रखना, हाइपोटोनिक वाटर एंटर्स, सेल स्वेल्स। अब हाइपरटोनिक कंडीशन इसका अपोजिट है, यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम में सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, इसलिए वाटर सेल से बाहर निकलता है। जब वाटर बाहर जाता है सेल श्रिंक करता है। तो हाइपरटोनिक water leaves, cell shrinks. So let's quickly revise all three. Isotonic, same solute concentration. Hypotonic, water enters the cell and the cell swells. Hypertonic, water leaves the cell and cell shrinks. Now that we understood how substances move across the membrane, let's understand the structure of the membrane itself. This brings us to the fluid mosaic model. Structurally, the cell membrane is extremely thin, about 7 to 10 nanometers thick. 1 nanometer is equal to 0.0000001 millimeter. It is made up of lipids, fats, and proteins. The fluid mosaic model explains its structure. सेल मेम्ब्रेन बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी थिकनेस लगभग 7 to 10 नैनोमीटर होती है। ये मेनली दो टाइप के मॉलिक्यूल्स से बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब मेम्ब्रेन की बेसिक अरेंजमेंट को समझने के लिए हमें लिपिड बाइलेयर समझना होगा। The membrane has a lipid bilayer, two layers of special fat molecules with water attracting heads outwards and water repelling tails inward, with proteins embedded in them. लिपिड बाइलेयर का मतलब है लिपिड्स की दो लेयर। इन लिपिड मॉलिक्यूल्स की दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक है हाइड्रोफिलिक हेड और एक है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर फेयरिंग या वाटर रेपेलिंग।
इसलिए हाइड्रोफिलिक हेड्स वाटर की तरफ रहते हैं और हाइड्रोफोबिक टेल्स अंदर की तरफ अरेंज्ड होते हैं। इस अरेंजमेंट से मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर बनती है। The molecules can move sideways, flip and rotate within the membrane, hence it is called fluid. Proteins in the membrane act like gatekeepers in helping substances pass through. अब इसे फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली फिक्स नहीं होते। ये मेम्ब्रेन के अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ये साइडवेज मूव कर सकते हैं और अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायनामिक और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इसलिए मॉडर्न में फ्लूइड वर्ड यूज किया गया है। Since the molecules are arranged like tiles in a mosaic, it is called the mosaic model. अब मोसेक वर्ड क्यों यूज किया गया? मोसेक एक ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें अलग अलग छोटे पीसेस मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स के बीच डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट मोसाइक जैसी दिखती है, इसलिए इसका नाम फ्लूइड मोसेक मॉडल पड़ा। मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन सब्सटेंसेस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी इन्हें गेटकीपर्स की तरह डिस्क्राइब करती है, यानी ये हेल्प करते हैं कौन से सब्सटेंस मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं। इसलिए मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड बाइलेयर नहीं है, इसमें प्रोटीन्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Now we move to the next important structure, cell wall. But remember, cell wall is not present in all cells. Let's understand where it is present and why it is so important. All living cells communicate with their surroundings and their neighboring cells through the cell membrane. However, cells of plant, fungi, and bacteria have an additional layer around the cell membrane called the cell wall. What do you think is the necessity of the cell wall in these cells? प्लांट्स जनरली एक जगह फिक्स रहते हैं, उनको विंड, रेन और दूसरे एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस को फेस करना पड़ता है। इसलिए प्लांट सेल्स को एक्स्ट्रा रिजिडिटी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहिए। इसी पर्पस के लिए प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है, सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल को स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है। ये सेल को अपना शेप मेंटेन करने में हेल्प करती है और प्लांट को अपराइट रहने में भी हेल्प करती है। We will do this activity later. First, read cell wall, the outer covering of cells. In general, plants cannot move from one place to another, so they need a rigid structure to withstand environmental stresses like wind and rain. Therefore, plant cells have an additional coverage outside the cell membrane called a cell wall. The cell wall also leaves nahi. The cell wall also helps leaves and flowers remain firm and maintain their shapes and help plants stay upright. Although rigid, the cell wall is permeable, which means water and some dissolved minerals can pass through it, along with the selective permeability of the cell membrane. The permeability of the cell wall helps plant roots absorb water and nutrients from the soil. तो क्यों सेल वॉल प्लांट्स में है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को कंफ्यूज मत करना। सेल वॉल परमेबल होती है, इसका मतलब वाटर और कुछ डिजॉल्व मिनरल इसके थ्रू पास कर सकते हैं, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल होती है, इसलिए दोनों का रोल अलग है। सेल वॉल provides support and protection. Cell membrane allows selective movement of substances. When we place a royal leaf or an
onion peel in a concentrated sugar solution, the plant cell lose water due to osmosis. However, the cells do not shrink in size because their rigid cell wall maintains their shape. The inner content of a cell shrinks as the cell membrane pulls away from the cell wall. This shows that the cell wall helps plant cells remain firm in their original shape. अब यहाँ फिर से ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है. जब प्लांट सेल्स को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखा जाता है तो वाटर सेल से बाहर निकलता है. इससे सेल का इनर कंटेंट श्रिंक करता है. लेकिन सेल वॉल रिजिड होती है, इसलिए वो जो है अपना आउटर शेप मेंटेन करती है. इसमें हमें सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन समझ आता है. इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड हेल्प्स मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट सेल. Animal cells, such as cheek cells, do not have a cell wall. Therefore, when placed in a concentrated sugar solution, they lose water and shrink. Without a rigid cell wall, animal cells can change shape easily. This cellular flexibility supports the overall movement and functioning of animal tissues. अब एनिमल सेल्स जैसे चीक सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए अगर एनिमल सेल्स को कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखे तो वाटर बाहर निकलने के कारण सेल श्रिंक कर सकता है. प्लांट सेल में सेल वॉल एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है, जबकि एनिमल सेल्स में ऐसी रिजिड आउटर वॉल नहीं है. यही प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंस है. The plant cell wall is primarily made up of cellulose, a type of carbohydrate formed by many glucose units linked together. Cellulose in our diet act as roughage, helping in digestion. Some microorganisms like fungi and bacteria also have a cell wall to provide protection and structural support to their cells. प्लांट सेल वॉल मेनली सेलुलोज की बनी होती है. सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है. ये बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स के लिंक्ड होने से बनता है. प्लांट में सेलुलोज स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एनसीईआरटी का ये जो बताना है कि ये सेलुलोज से बनी है. सेलुलोज एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट से बना है और ये रफीज की तरह एक्ट करता है. डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये एग्जाम में आता है. तो एनसीईआरटी यही हमें बता रही है कि हमारे डाइट में सेलुलोज रफेज की तरह काम करता है. एंड वी ऑल नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफेज, है ना. क्लास 6 में सबने पढ़ा है. सो मैंने पीछे एक्टिविटी छोड़ दी थी, अभी मैं वो करूँगी. Okay, activity 2.3, let us investigate. Prepare temporary slides of a thin peel of an onion leaf or a royo, cradle lily leaf, and mount it with saffron using cover slip to observe plant cells under a microscope. Similarly, prepare a temporary slide of cheek cells by gently scraping the inner side of your cheek with a cotton swab or the blunt end of a toothpick. Spread the cheek cells on a clean glass slide. Add a drop of water followed by a few drops of methylene blue stain and carefully place a cover slip. Observe both these slides under a microscope. What do you observe? Onion peel cells or royo leaf cells are box shaped and regularly arranged, whereas cheek cells are irregularly arranged. Why do you think this difference exists? Prepare 2 slides of a royo leaf peel and human cheek cells again and put 20% sugar solution on them. Observe them under a microscope after half an hour. What do you observe? You must have observed that the boundaries of the plant cells remain the same, but their inner content shrinks and the space between the inner and outer boundaries increases. You may observe that the cheek cells, on the other hand, have shrunk considerably. So
पहले मैं ये जो मैंने फर्स्ट 5 पॉइंट रीड करे इसको एक्सप्लेन करूंगी एंड ये ऑब्जर्वेशन बताऊंगी। तो प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के लिए अनियन पील या फिर रोयो लीफ पील को लेंगे, स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और स्टेन का यूज करेंगे ताकि सेल्स क्लियरली दिखाई दे। अब इसी तरह हम चीक सेल्स की स्लाइड भी प्रिपेयर करेंगे। चीक सेल्स एनिमल सेल्स है। इन सेल्स को चीक के इनर साइड से जेंटली कलेक्ट किया जाता है, फिर स्लाइड पर रखेंगे और स्टेन करेंगे ताकि माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स क्लियरली दिखे। अभी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल्स जनरली बॉक्स शेप्ड और रेगुलरली अरेंज्ड दिखाई देते हैं, जबकि चीक सेल्स इरेगुलरली अरेंज्ड दिखाई देते हैं। इसका मेजर रीजन है सेल वॉल। प्लांट सेल्स में रिजिड सेल वॉल होती है जो शेप और सपोर्ट मेंटेन करने में हेल्प करती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल सेल्स कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है। देन बाद में हमें कह रहे हैं कि आप इसे 20% कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रखो, दोनों को। सो वो और उसके ऑब्जर्वेशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में वाटर सेल से बाहर निकलेगा। प्लांट सेल में इनर कंटेंट श्रिंक करेगा, लेकिन जो सेल वॉल है वो अपनी जो बाउंड्री है उसको मेंटेन करेगी। इसलिए सेल वॉल और जो अंदर का जो इनर कंटेंट है इनके बीच में हमें स्पेस दिखाई देगा। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए वो कंसिडरेबली श्रिंक कर लेगा और उसमें जो शेप है वो भी चेंज हो जाएगी। सो बिफोर वी फिनिश दिस टॉपिक, लेट अस सॉल्व द 3 पॉज एंड पॉन्डर क्वेश्चंस। What argument would you what argument would you give for the necessity of a cell wall in plants usually fixed in one place versus in animals usually moving from one place to another? तो क्या आर्ग्यूमेंट दोगे तुम सेल वॉल की नेसेसिटी को लेके कि प्लांट्स पे एक जगह रहता है तो उसको क्यों चाहिए, और एनिमल्स तो इधर से जगह मूव करता है उसको क्यों नहीं चाहिए? सो वी नो द आंसर, write it down. I will dictate. Plant cells are usually fixed in one place. So they need additional structural support. अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो फ्रॉम रेन, नो दी साइक्लोन्स एटसेट्रा। बुक में लिखा हुआ है ऊपर, जस्ट चेक इट। And rigidity to withstand environmental conditions. And rigidity you can write conditions or you can write stresses. जिसमें भी comfortable लगे. The cell wall provides this support and helps maintain the shape of plant cell. Second question, what consequences would you predict for a plant cell if its cell wall were to become as flexible as a cell membrane? So क्या होगा अगर हमारा प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह फ्लेक्सिबल हो जाएगी?
Answer 2. If the cell wall became as flexible as the if the cell wall became as flexible as the cell membrane, the plant cell would lose. The plant cell would lose much of its rigidity and structural support. Much of its rigidity and structural support. अगर हम उसे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में भी रखेंगे तो सेल वॉल की वजह से ही तो दोनों के बीच में स्पेस था जो हमारा इनर कंटेंट था और जो सेल वॉल था. अगर सेल वॉल ही परमिएबल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन की तरह, तो ऐसा नहीं होगा, वो भी फिर श्रिंक कर देगी. इट वुड बिकम मोर डिफिकल्ट for the cell to maintain its definite shape. It would become more difficult for the cell to maintain its definite shape. Then, why is it important to cut the two potato pieces in their roughly equal size and measure their initial weight before placing them in different liquid? ऐसा क्यों जरूरी है कि हम दोनों पोटैटो पीसेस को इक्वल साइज में कट करें और उनको लिक्विड में डालने से पहले उनका इनिशियल वेट चेक करें? Answer 3. The potato pieces the potato pieces should be approximately equal in size so that the the experiment remains fair and the changes in their weight can be compared accurately. Their initial weight is also measured so that we can determine how much their weight changes. I can't. Okay, I will write here. How much their weight changes after the experiment.
Now we have completed the entire concept. Before ending today's class, let's make short notes for quick revision. So take out your notebook and write the heading: cell membrane. Thin boundary surrounding the cell. Thin boundary surrounding the cell. Also called the plasma membrane. Protects the content of the cell. Protects the content of the cell. Separates the cell from its surrounding. Selectively permeable. Allows some substances to pass. Allows some substances to pass through while preventing others. Next, osmosis. Movement of the water. Movement of water through a selectively permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Lower concentration. Involves movement of water, requires a selectively permeable membrane. Requires a selectively permeable membrane. Water moves towards the region with lower water concentration. Then we had potato experiment. Water moves towards the region with lower. In plain water,
Potato swells, weight increases. In concentrated salt or sugar solution, potato shrinks and weight decrease. Decreases. Then we have diffusion. Net movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Then we will do a difference between osmosis, diffusion. This comes in exam. Movement of water, movement of particles, requires a selectively permeable membrane. Requires a selectively permeable membrane. Does not necessarily require a membrane. Water moves across the membrane. Water moves across the membrane. Particles move down their concentration gradient. Then we studied types of solutions. Isoton Isotonic solution, hypotonic solution, hypertonic solution. An isotonic solution, solute concentration outside
the cell is equal to solute concentration inside the cell. In hypotonic, solute concentration is no solute concentration outside outside the cell is lower than inside. In hypertonic, solute concentration outside the cell is higher than inside. No net movement of water. Water enters the cell. Water leaves the cell. This also comes in exam. In isotonic solutions, cell remains approximately the same. Cell remains approximately the same in size. Here cell swells and cell shrinks. ISO is equal to same. Hypotonic, water enters, cells swell. Hypertonic, water leaves, cell shrink. Then we studied about the fluid mosaic model. Fluid mosaic model. The cell membrane is approximately 7 to 10 nanometer thick. Is mainly composed of lipids and proteins. Has a lipid bilayer. Contains embedded proteins
has hydrophilic head facing outward, has hydrophobic tail facing inward. And on that diagram that comes in exam, okay, allows molecules to move within the membrane. Therefore, the membrane is fluid. The arrangement of different molecules, the arrangement of different molecules resembles a mosaic. Therefore, fluid plus mosaic is equal to fluid mosaic model. Now comes the cell wall. An additional covering present outside the cell membrane, present in plants, fungi, and bacteria. In plants, the cell wall is made of cellulose, provides strength and rigidity, helps maintain the shape of cell, helps plant withstand environmental stresses, helps plant remain upright, permeable. Waiting for 1 minute, take a screenshot or write it down. Then we will do plant cells versus animal cells. Very important, it also comes in exam. Okay, plant cell versus animal cell. Plant cell, animal cell.
Cell wall is present, cell wall is absent. More rigid, more flexible. Cell provides structural support. No rigid cell wall. Maintains a definite shape. Can change shape more easily. Inner content shrinks within the cell wall in a concentrated solution. Cell can shrink considerably. Waiting for 1 minute. Okay, so before we end, let's revise the entire topic in 1 minute. So, first we studied about cell membrane. What is cell membrane? Thin boundary surrounding the cell, selectively permeable. What is the another name for cell membrane? Plasma membrane. Then we studied osmosis, movement of water through a selectively permeable membrane from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Then diffusion, net movement of particles from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Isotonic solution, solute concentration outside the cell is equal to the solute concentration inside the cell. Hypotonic solution, water enters the cell, cell swells. Hypertonic solution, water leaves the cell, cell shrinks. Then comes the fluid mosaic model. It has a lipid bilayer, contains embedded proteins, allows molecules to move within the membrane, therefore, the membrane is fluid. The arrangement of different molecules resembles a mosaic. Then comes our cell wall, an additional covering present outside the cell membrane. And main component of plant cell wall, cellulose. Major difference between plant cell and animal cell. Plant cells have a cell wall, while animal cells don't have a cell wall.
So, students, with this, we have completed 2.2 structure of a cell. Today, we understood how the cell interacts with its surrounding, how the cell membrane controls the movement of substances, and how osmosis and diffusion work. We also understood isotonic, hypotonic, and hypertonic solutions, the fluid mosaic model of the cell membrane, and the importance of the cell wall. Make sure you complete the short notes and revise the diagrams from today's topic. And remember, we are studying this chapter step by step. In today's class, we studied the outer structure and boundaries of the cell. In our next video, we are going to move inside the cell. Our next topic will be interior of a cell. Here we will understand the different structures present inside the cell and their functions. So make sure you watch the next video. Thank you for watching and I will see you in the next class. Like, share and subscribe.